Before starting the meeting, as usual, I expect all of you must be knowing we will do small prayers. Om Jnanatimirandhasya Jnananjana चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So I'm very happy to be here with all of you by the order of His Grace Ram Charan Prabhu. And I would appreciate if you can start your video so that I can feel I'm talking to an audience. So today's topic is very much important, as all of you must be knowing that we'll be discussing on how to see Lord everywhere, how to see Krishna everywhere in all our situations, on all of our circumstances, and whatever we see and perceive in the world, how to see Krishna everywhere. तो इसके पहले I hope all of you must have covered a certain certain section of philosophy. All of you must be well acquainted with the philosophy of Krishna consciousness, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पहले से ही पता होंगे कृष्ण कॉन्शियसनेस के बारे में, भक्ति के बारे में. So we'll be just revising them for a while and we'll be discussing from Bhagavad Gita. I hope all of you can see my screen, which I have shared. So we are discussing from Bhagavad Gita, chapter 7. Chapter 7 is entitled as the knowledge of the absolute. क्योंकि ये जो सातवां अध्याय है, the seventh chapter is actually very very important. So in this chapter, Lord Shri Krishna says about himself. He explains his real identity to Arjuna. That's why it is called knowledge of the absolute. Lord is giving knowledge about himself. So it's a very very important chapter क्योंकि in the Vedic scriptures, Vedic शास्त्रों में there have been very very less sections or very very less incidences or references जहां पे भगवान खुद अपने बारे में बता रहे हैं. कहीं पे ऐसा होता नहीं. Many of the Vedic scriptures, if you will see the Vedas, Upanishads and all, there are aphorisms, there are sutras there's a particular kind of story. लेकिन भगवत गीता जो है, it is the essence of all the Upanishads as it is said in the Padma Puran. तो ये जो चैप्टर है इसमें स्पेसिफिकली द लॉर्ड टेल्स अबाउट हिज ओन आइडेंटिटी, हिज पर्सनल आइडेंटिटी, कि वास्तव में मैं हूं कौन, एक्चुअली हु आई एम. और उसको बताते समय लॉर्ड कृष्णा व्हेन ही इज एक्सप्लेनिंग टू अर्जुन, धीरे धीरे जब वो सेकंड चैप्टर से कर्म योग को पार करते हुए ही इज एक्सप्लेन अष्टांग योग, ही इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ योगा, एंड नाउ ही इज एक्सप्लेनिंग अबाउट हिमसेल्फ कि मैं एक्चुअली मैं हूं कौन, हु आई एम. So he starts, actually he comes out with a conclusion, a very very beautiful verse, and a very very important and principal verses of the Bhagavad Gita. This is the one of the very first verses which I learned from the Bhagavad Gita. It's very very important verse. So this is seventh chapter, text 7, सातवें अध्याय का सातवां श्लोक. It's a very important verse. मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव. So now the Lord in this verse is explaining a very beautiful concept. He is declaring that, oh conqueror of wealth, that's the meaning of Dhananjaya. He calls Arjuna as Dhananjaya because he conquered the wealth of the whole world for
युधिष्ठिर महाराज। अभी जब बता रहे हैं तो क्या बता रहे हैं भगवान? लॉर्ड इज एक्सप्लेनिंग दैट देयर इज नो ट्रुथ सुपीरियर टू मी, देयर इज नो ट्रुथ सुपीरियर टू मी, आई एम द most superior truth of this world. There is nothing beyond me. If at all you explain it, if at all you see it analytically, mattah para taram na anyat. Nothing is, equal to me and nothing is above me. So I am the most confidential, most superior truth of this world. मेरे से ऊपर कोई नहीं है, मेरे बराबर कोई नहीं है. A very bold declaration made in the Bhagavad Gita. Therefore, Bhagavad Gita is a very, very revolutionary scripture, जिसमें भगवान अपने आइडेंटिटी के बारे में बता रहे हैं वेरी वेरी क्लियरली. वन कैन बी वेरी वेरी क्लियर इन हिज आइडेंटिटी. उसके बाद क्या बता रहे हैं? एवरीथिंग रेस्ट अपॉन मी, सब चीजें मुझ पर आधारित हैं. एवरीथिंग रेस्ट अपॉन मी, आई एम द होल्डर ऑफ एवरीथिंग, एंड as pearls are strung on a thread. He is giving the example that everything rests upon me as pearls are strung on a thread. All of you must have seen pearls, pearl necklace or a garland of flowers. तो जब भी हम कोई गार्लैंड या मोती की माला देखते हैं, so what do we see? We just see the pearls in it, or we see the flowers in it. But what we cannot see in that particular garland or necklace is the thread which binds all the flowers, which is the cause of all the flowers. That particular thread has binded all the flowers or the pearls of a particular necklace. And that particular thread is the Lord Himself. It's just an analogy to compare His identity. If at all He is not seen, but He can be proven, right? So, what does it signify? That the unseen is proven by the seen. हम भगवान को देख नहीं सकते. He doesn't show Himself. We cannot see Him, but He can be proven. How He can be proven? By the seen. If at all you are seeing that particular bunch of flowers strung on a particular pattern, automatically you have to understand that there has to be a thread. Those particular flowers cannot be just randomly fixed upon a particular place. There has to be a thread. वो धागे में ही लटके होंगे, बिना धागे के वो नहीं रह पाएंगे. So when one understands this particular concept of the identity of the Supreme Lord, then he starts to feel the presence of the Lord everywhere. कैसे वो हम अभी आगे देखेंगे. First of all, we'll cover this, that is the identity of the Lord. He is the basis of everything. Everything comes from Him. He is the supporter and holder of each and everything of this world. Now we will discuss some main points of the purport. There's a common controversy within the Supreme Lord: is personal or impersonal. As far as Bhagavad Gita is concerned, absolute truth is the personality of Godhead, and this is confirmed in every step. That the personality of Godhead is supreme truth, also affirmation of the Brahma Samhita. So Brahma Samhita is explaining this, that how the supreme absolute truth is a person. Why we are discussing all this? अभी आप बोलोगे कि टॉपिक तो कुछ और है, ये सब आप क्यों बता रहे हो? What is the meaning? We are discussing all this so that our fundamentals become very, very clear, that the person who is the basis of everything, who is the basis of everything, and is he a person? Yes, he is a person. He is a person and he is a basis of everything. He is a source of everything. From him, everything emanates. केवल इतना हम क्लियर करना चाह रहे हैं. And therefore, I'll move on. In the material world, Brahma, the primeval living entity within the universe, is understood to be supreme. But beyond Brahma, there is the transcendence. So this is a quotation from the Shvetashvatara Upanishad. If you can see my screen, I'll quote it in black. Right? Tato yad uttarataram tad arupam anamayam ya etad viduramritaste bhavanti athe tare dukkham evapiyanti. Right? And many more references are given from Shvetashvatara Upanishad. There is no truth superior to that supreme person. So conclusion is, supreme absolute truth is the supreme personality of Godhead, who is all pervading by his multi energies, both material and spiritual.
तो अभी हम हमारा मेन टॉपिक अभी चालू होता है, दैट सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ. First of all, nothing comes from explosion. Every creation implies creator. Or and who is that creator? That creator is the supreme absolute truth. He is a person. और ऐसा नहीं है कि वो एक अकेला आदमी है, अपने घर पर रह रहा है. He is a person alone, no one to help him. He's just alone sitting on a chair, boring. No, he's not like that. There are certain energies. He has his multifarious spiritual and material energies, which are very, very vividly and in detail explained in the Bhagavad Gita. अभी वो कैसे होते हैं? How to feel him, how to see him, how to signify his presence everywhere. तो सातवें श्लोक के बाद, after the seventh verse, Lord Krishna in the eighth verse explains to Arjun that how he has to be perceived, how we need to see him, how we need to feel his presence. That's what is the subject matter which is coming now. So now we will start our actual topic, which was there, seeing the Lord everywhere. So this is another very important verse of the Bhagavad Gita, where like the concept goes that if God is not seen, he doesn't exist. But a devotee of the Lord can see God in each and every situation, in each and every substance. How to do that? That method is explained here. Seventh chapter, text number 8, आठवां श्लोक. रसोऽहम् अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु. What is the translation? The translation goes like, O son of Kunti, I am the taste of water, the light of the sun and the moon, the syllable Om in the Vedic mantras. I am the sound in ether and ability in man. So, what is he saying? He's declaring, he's again explaining to Arjun, Raso aham apsu kaunteya, O son of Kunti, I am the taste of water. Now you will doubt that does water have any taste? When we read about characteristics and properties of water, we used to see that water never has a taste. Water does not have a taste. But water has a taste, and it can only be perceived by a person who is thirsty. Now, when someone is coming after playing cricket for 5 to 6 hours, and then when he is thirsty, his thirst cannot rarely be quenched by soft drinks and cold drinks. And that satisfaction which a person gets by drinking, when he drinks a cup of water, that satisfaction, that taste which the water has got, that is the emanation of the Supreme Personality of God. तो वो जो पानी का स्वाद हमको मिलेगा, that comes from the Supreme Personality of God. Another example he gives, the light of the sun and the moon. The light which the sun emanates, the sun radiates, and the soothing light which the moon radiates and emanates. Who is the source of all that? Krishna is the source of all these emanations. अभी कोई ऐसा बोल सकता है, someone can say that if Lord can declare something like that, even we can declare, I am the taste of water. But can anyone dare to declare himself that he is the taste of water, or he has brought the taste of water? What human beings are doing, they are spoiling the taste of water, right? We can manipulate the taste of water, or rather what we are doing today by industrialization is we are spoiling the taste of water. We have made the water poisonous. The light of the sun and the moon, have we produced the sun and the moon? Have we created them? Are we creating the light by the sun and the moon? We can manipulate them. We can manipulate the energy of the sun and create turbines and thereby create electricity. But we cannot create sun and moon, and we haven't created the energy given by the sun and the moon as well. इसीलिए, since Lord has created all these structures, since the Lord has made sun and the moon, he has made water, therefore he can claim that he is the taste of water. Another point which can come at a debate can come that
Even we can create water. We can take some hydrogen, we can take some oxygen, we can create water in a test tube, in a chemical lab. But how much water can you create? Can you create oceans of water? Can we create an ocean of water? Can any scientific advancement can create oceans of water? समुद्र जितना पानी कोई भी इंसान नहीं बना सकता है. Whatever water a person can make, he cannot make that much artificial body of water which the sun will evaporate and the clouds will gather. So therefore, the Lord can be perceived by his creation itself. And more, we'll furthermore discuss that I am the syllable Om in the Vedic mantras. I am the sound in ether and ability in man. So whenever we will see creation of the Lord, whenever we will feel it, then we will find the presence of the Lord everywhere. And a devotee, therefore, he need not see God. उसको भगवान को देखने की जरूरत नहीं पड़ती है. Whenever he will drink water, he will feel the presence of the Lord. He can feel the presence of the Lord. That this water has been created by the Lord, and this particular taste of water which is there, that is created by Lord also, or the Lord himself is the taste of that water. A very beautiful example I'll give. I'll share one incident. Once His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, he was in the United States. So when he was in the United States, so it was the 1970s, late 1960s and the early 1970s. So he met the hippies, and hippies were hardcore drunkards. They used to drink a lot. So they, whenever he used to talk about Krishna, whenever he used to talk about God, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता था. That what is this? How can we feel God? They used to ask Swamiji, how can we feel God? You say God exists, Krishna exists. There's some boy called Krishna who is God, but how can we feel him? So Srila Prabhupada explained to that particular hippie in the United States. He said, "Do you drink wine?" He said, "Yes, I drink wine." So he said, "How is the taste of wine?" That hippie replied, "Wine is very delicious." So Swami Prabhupada, Srila Prabhupada, then replied that the taste which you get from your wine, that is actually the Supreme Lord, Krishna. That is the creation of Krishna. The taste which you are getting is actually manifestation of God. So then that hippie actually understood. Then he actually understood कि हमारा भगवान से क्या नाता है और भगवान की प्रेजेंस हम कैसे कैसे फील कर सकते हैं. तो इतने प्रैक्टिकल तरीके से जो है श्रील प्रभुपाद ने एक हिप्पी को भगवान के व्यक्तित्व के बारे में समझाया और उनकी उपस्थिति के बारे में समझाया, क्योंकि वो डायरेक्ट तो समझ नहीं सकता, इसलिए उसको शराब के माध्यम से समझाया कि शराब का जो टेस्ट आपको लगता है वो भगवान के बराबर है या वो खुद भगवान है. सो वेरी वेरी very practical Srila Prabhupada gave, very practical solution Srila Prabhupada gave, that how to see Lord everywhere, how to feel the presence of God. अभी परपट पे हम जाते हैं तात्पर्य पर. तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं that this verse explains how the Lord is all pervasive by his diverse material and spiritual energies. The Lord can be preliminarily perceived by his different energies, and in this way he is realized impersonally. Right? A very beautiful example can be given. जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आप किसी फैक्ट्री में जाते हैं. आप किसी फैक्ट्री में जाते हैं तो वहां आप क्या देखते हैं, एक तो फैक्ट्री है, और मान लीजिए आप किसी रिलायंस की फैक्ट्री में गए. सो यू विल सी देयर आर वर्कर्स ऑपरेटिंग इन डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस, और उस पर्टिकुलर फैक्ट्री का या मान लीजिए रिलायंस स्मार्ट, उस पर्टिकुलर रिलायंस स्मार्ट का कोई एक मैनेजर होगा जो वहां पे काम कर रहा होगा. राइट?
सो एज सुन एज यू एंटर रिलायंस स्मार्ट, आप जैसे ही इसमें घुसोगे तो आपको क्या समझ में आएगा? आपको रिलायंस से क्या समझ में आएगा? धीरू भाई अंबानी। तो अभी रिलायंस स्मार्ट किसकी फ्रेंचाइजी है या किसके अंडर है? मुकेश अंबानी के। तो जैसे ही आपको समझ में आएगा कि हाँ, आप जैसे ही घुसोगे, आप रिलायंस स्मार्ट में घुसते हो, आपको समझ में आएगा कि ये जो प्रॉपर्टी है कौन ओन कर रहा है इसको? मुकेश अंबानी। बट ही इज पर्सनली नॉट प्रेजेंट देयर। समझ में आ रहा है आपको? वो खुद वहां पर नहीं है, लेकिन वो अपने मैनेजर के थ्रू ही इज रनिंग दैट पर्टिकुलर रिलायंस स्मार्ट। वो अपने मैनेजर के माध्यम से वो दुकान या जो मॉल है वो चला रहे हैं। तो सिमिलरली भगवान जो हैं, उनकी शक्तियों के साथ ही इज प्रेजेंट इन हिज स्पिरिचुअल एंड मटेरियल एनर्जीज। ही इज डाइवर्स, ही इज प्रेजेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड वाया मीडियम ऑफ हिज एनर्जीज। लेकिन ही इज प्रेजेंट वेरी वेरी इम्पर्सनली। लेकिन ऐसा नहीं है कि एनर्जीज के लिए भगवान, एनर्जीज में भगवान है तो भगवान एक्चुअली में नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुकेश अंबानी जी का जो पर्टिकुलर रिलायंस स्मार्ट जो है उसमें मैनेजर के थ्रू वो काम कर रहे हैं, सो ही इज लाइट, ही इज नॉट देयर। मुकेश अंबानी एग्जिस्ट, मुकेश अंबानी भी हैं, लेकिन वो उस पर्टिकुलर मैनेजर के माध्यम से वो पर्टिकुलर मार्ट में जो है उसमें काम कर रहे हैं। इसीलिए भगवान भी हैं, लॉर्ड एग्जिस्ट, बट ही इज डाइवर्स थ्रू हिज मटेरियल एंड स्पिरिचुअल एनर्जीज। और ऐसा नहीं है कि भगवान अपनी एनर्जी में ही है और भगवान एक्चुअली में नहीं है। भगवान इज नॉट अ पर्सन, बिकॉज देयर इज अ वेरी वेरी ग्रेट मिसकंसेप्शन इन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट कि पूछते हैं अगर किसी से कि भगवान कौन है, हु इज गॉड? सो द मोस्ट फेमस रिप्लाई विच कम्स थ्रू पीपल इज दैट व्हाट इज गॉड? गॉड इज एनर्जी। ईश्वर जो है एक प्रकाश है, गॉड इज एनर्जी। एनर्जी क्यों? क्योंकि एनर्जी पूरी दुनिया में है, इसलिए गॉड इज द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी। हाफ द कॉन्सेप्ट इज करेक्ट, बट देयर हैज टू बी ए पर्सन हु होल्ड्स द एनर्जी। अगर एनर्जी है तो एनर्जेटिक भी है। दैट्स द होल ऑल कंसेप्ट अबाउट ऑल एंड ऑल हाउ टू सी द लॉर्ड एवरीवेयर। तो अभी हम परपट में अगर आगे बढ़े, सो देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल व्हिच इज कमिंग एज द डेमिगॉड इन द सन इज अ पर्सन and is perceived by his all pervading energy, the sunshine. So the Lord through his although in his eternal abode is perceived by his all pervading diffusive energies. The taste of water is the active principle of water. No one likes to drink sea water because the pure taste of water is mixed with salt. Attraction for water depends on the purity of the taste, and this taste is one of the energies of the Lord. तो अभी ऐसा नहीं है कि जो पानी है या कुछ भी है, इफ इट इज एनर्जी ऑफ द लॉर्ड इट कैन बी वर्शिप्ड एज द लॉर्ड। एक और बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल श्रील प्रभुपाद अपनी पुस्तकों में देते हैं। ही गिव्स एन एग्जांपल दैट सपोज there's a father and there's a son. So where has the son come from? Son is the energy of the father. From father the son has come, and son is the energy of the father. So when you will see the son, जब आप एक पर्टिकुलर इंसान को देखते हैं, so when you will see the son and if you are in knowledge of his father you will automatically remember his father. So son is the maybe the his son may be the representative of father, but son is not the father. समझ में आया आपको? सन इज नेवर द फादर, फादर इज फादर, सन इज सन, है ना? जो बाप है, बाप बाप है, बेटा बेटा है। बेटे को देख के बाप की याद आ सकती, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा बाप बन गया। बेटे को बाप नहीं मान सकते। बाप अलग से एक व्यक्ति है। द फादर इज अ पर्सन ऑल टुगेदर वेरी वेरी डिफरेंट। एंड देयरफॉर द पीपल ऑफ द वर्ल्ड हु वर्शिप एनर्जी and who worship anything, they can worship mountains, they can worship stones. And the doubt may also come then what about the deities? So that we will explain later. But everything is an energy of the Lord, and the Lord is altogether different. He is present in that particular case through his energy, like that. So that is the way of perceiving the Supreme Lord. Practically speaking,
There is no very very important concept has been explained here. Please hear carefully. ध्यान से सुनिए सब. Practically speaking, there is no conflict between personalism and impersonalism. One who knows God, that the impersonal conception and personal conception are simultaneously present in everything, and that there is no contradiction. Therefore, Lord Chaitanya established his sublime doctrine, Achintya Bheda Bhed Tattva, simultaneous oneness and difference. अभी एक बहुत अच्छी चीज हमने सीखी कि इम्पर्सनलिज्म और पर्सनलिज्म में बिल्कुल अंतर नहीं है. दे आर द सेम. जैसा कि हमने रिलायंस स्मार्ट का एग्जांपल दिया था, है कि नहीं? हमको वो मार्ट में घुसते से ही अंबानीज की याद आएगी. वी कैन रिमेंबर द अंबानीज seeing the name of Reliance. But that doesn't mean you will deal with Reliance Fresh Mart or the manager of the Reliance Fresh Mart as good as the Ambanis. इसका मतलब ये भी नहीं है कि अंबानीज एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि अंबानीज जो हैं दे आर नॉट प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर मार्ट. वो उस पर्टिकुलर दुकान में भी प्रेजेंट हैं वाया हिज एनर्जीज. कुछ घाटा होगा उनको, घाटा होगा. शॉप बंद होगी उनको, घाटा होगा. प्रॉफिट होगा उनको, प्रॉफिट होगा. लेकिन वो वहां प्रेजेंट नहीं है. लेकिन वो प्रेजेंट कहीं और पर है. आई होप आई एम वेरी क्लियर इन दिस एक्सप्लेनेशन. So therefore, there is no difference as such in personalism and impersonalism. We'll move ahead. The light of the sun and the moon is also originally emanating from the Brahma Jyoti, which is the impersonal effulgence of the Lord. And Pranava or the Omkar transcendental sound is the in the beginning of every Vedic hymn addresses the Supreme Lord. Because the impersonalists are very much afraid of addressing the Supreme Lord Krishna by his innumerable names, they prefer to vibrate the transcendental sound Omkar. But they do not realize that Omkar is the sound representation of Krishna. The jurisdiction of Krishna consciousness extends everywhere, and no one knows Krishna consciousness is, and one who knows Krishna consciousness is blessed. Those who do not know Krishna consciousness are an illusion, and so knowledge of Krishna is liberation, and ignorance of him is bondage. क्या उन्होंने एक्सप्लेन किया है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन विच इज एक्सप्लेन इन द purport, that Omkar is the sound representation of Krishna, representation of his impersonal feature. Krishna is altogether a different person. He is represented by the sound Omkar. कोई भी मंत्र अगर आप वेदों में लेंगे तो वह शुरुआत कहां से होता है? ओम से. ओम. Like we already chanted the Mangalachan. ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया. तो भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है, जो भगवान की आभा है, effulgence from his body, that is represented by ओमकार. ये भगवद गीता का कंक्लूजन है. And Omkar can be a representation of God, but God is a person, he will have his name. तो इसलिए भगवान का जो प्रेजेंस फील करना है ना, वो that's an impersonal concept if we see in that sense. But भगवान अलग से एक व्यक्ति भी है, and therefore ये ऐसा भी नहीं ये गलत है, ऐसा भी नहीं है ये गलत है. दोनों सही हैं. दोनों में से ऐसा नहीं है एक ही सही है. both are correct, and therefore this is the doctrine of Chaitanya Mahaprabhu was achintya bheda bhed. There is simultaneously one and different. एक है भी और नहीं भी है. जैसे हमने एग्जांपल दिया ना पिता का और पुत्र का. पुत्र पिता की छवि बरकरार रखता है, लेकिन पुत्र पिता नहीं. पिता अलग है. Srila Prabhupada used to give another example because that time Ford Motors was very very prominent. तो फोर्ड की गाड़ी आप देखोगे, ऐसा फोर्ड अभी तो चलता नहीं है. चलिए मान लीजिए आप अगर टाटा की गाड़ी देखेंगे, टाटा का ट्रक देखेंगे, टाटा की गाड़ी देखेंगे, तो अगर आप अल्टीमेटली एंड तक जाएंगे तो क्या समझ में आएगा आपको गाड़ी किसकी है? इट रिमाइंड्स यू ऑफ रतन टाटा. लाइक सपोज यू सी जैगुआर.
So you will automatically remember Ratan Tata has purchased the franchise. They are making Jaguar. But that Jaguar is not Ratan Tata. रतन टाटा इज रतन टाटा, डिफरेंट ऑल टुगेदर। और जब आप गाड़ी देखोगे, आपको गाड़ी देखकर रतन टाटा का याद आता है। सो लाइक दैट, सो दैट पर्टिकुलर कार इज रिप्रेजेंटिंग रतन टाटा, बट इट इज नॉट रतन टाटा। Srila Prabhupada used to say that car, Ford is car, but car is not Ford. उस समय फोर्ड मोटर्स के हेनरी फोर्ड के जो पर पोते थे, एल्फ्रेड फोर्ड, ही जॉइंड द कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट, ही बिकेम ए मेंबर। तो उन्होंने उनको इस प्रकार से ये एग्जाम्पल समझाया, उनको इस प्रकार जल्दी समझ में आया कि फोर्ड की अगर आपने कोई गाड़ी देखी है तो वो गाड़ी इट कम्स फ्रॉम फोर्ड, बट इट डजंट मीन दैट दैट कार कैन बी वर्शिप्ड एज फोर्ड। कार के साथ आप डीलिंग नहीं कर सकते, कार की पूजा नहीं कर सकते, वो आपको फोर्स के साथ करना पड़ेगा, लाइक दैट। सो इट इज साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट। तो ये कॉन्सेप्ट हमारी लाइफ में जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर हम हर चीज भगवान के रिलेशन में देखना चालू कर देते हैं, when we start that conception of seeing everything in relation to God, there is artificially no need to develop any more qualities within us. Automatically you become a very influential and valuable person. क्यों? क्योंकि आपको अलग से चीजों की वैल्यू करने का जरूरत नहीं है। I'll give you an example. There are so many campaigns in the outside world जो कि क्या बताते हैं? पानी बचाओ आंदोलन, लड़की बचाओ आंदोलन, ये वाला आंदोलन, वो वाला आंदोलन, लाइट बचाओ आंदोलन, यमुना बचाओ आंदोलन, नदी बचाओ आंदोलन। But just imagine all of them apply the principles of this verse. सब लोगों को ये पता रहेगा कि पानी जो है भगवान की एनर्जी है, इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऑटोमेटिकली दैट पर्सन वैल्यूज ईच एंड एवरीथिंग। अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये प्रिंसिपल वो फॉलो करेगा दैट एवरीथिंग इज इन रिलेशन टू द लॉर्ड, तो वो हर चीज की वैल्यू करना सीखेगा, चाहे वो कोई सामान हो, पानी हो, कपड़े हो, इंसान हो, जानवर हो। वन हु बिकम्स डिवोटी ऑफ कृष्णा, उसको अलग से नहीं बताना पड़ता कि हमें जो है इंसानी जिंदगी की बहुत कदर है, एंड वी नीड टू, नाउ देयर इज कैंपेन गोइंग ऑन, गो वीगन। Veganism is very much prominent nowadays, especially in the United States. At least 1.5 million people have turned out to be vegans. At least when I was there, now they must have increased by now. So nowadays they are becoming vegans. Vegans मतलब वो मांस नहीं खाना चाहते। I met one of them. क्या बोलते हैं कि we value life. किसी भी चीज में जिंदगी है तो हम उसकी कदर करते हैं। तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट है क्या? नया नया निकाला? नो, इट वाज ऑलरेडी देयर। It was already there in the Bhagavad Gita that whatever is there has to be seen in the relationship of the Supreme. हर जगह जहां जो जो चीज हमारे पास है, हमें समझ में आना चाहिए कि वो भगवान से ही आई। It has come from the Lord and therefore has to be valued because it is a creation of the Lord. भगवान के बारे में अगर कोई जानेगा तो ऑटोमेटिकली इस क्रिएशन के बारे में वैल्यू करेगा। Like suppose you know a person, if you want to develop relationship with him, so whatever things are in connection with him, you will value it. Therefore, when one becomes God conscious, automatically he values each and everything. Artificially कुछ नहीं करवाना पड़ता उसे। He does not cause trouble to anyone. He does not waste any resources which are available on this planet. कुछ भी चीजें इकट्ठा नहीं करेगा, वेस्ट नहीं करेगा। He won't exploit anyone. He won't exploit any resources. Automatically this particular consciousness in each and every individual, ये केवल एकमात्र चीज दुनिया का भला कर सकती है। अगर सब ये समझ जाएं कि हर चीज भगवान से आई है, इट हैज टू बी वैल्यू। इफ एवरीवन स्टार्ट सीइंग दिस कनेक्शन and each and every person in this world, no more solutions of peace and prosperity are required. Automatically things will go, automatically things will progress. Just this very simple concept of spiritual life.
So therefore, when one starts seeing this relation कि भगवान हर जगह है, he becomes a dear devotee of the Lord and he becomes dear to the whole world. तो भगवान को भी प्रिय होता है और वो पूरी दुनिया को भी प्रिय होता है, because he values each and every one, regardless of whatever gender a person has, whoever he is, he learns to value those things. तो इसलिए जब भगवान की प्रेजेंस हम हर जगह देखते हैं, when we start perceiving Lord everywhere, automatically we become an asset to this world with this very simple concept of spirituality, that how everything is to be seen in the relation. So I'll stop here. I'll stop my presentation here. If anyone has any question, comments, and corrections, Ramcharan Prabhu can let me know through the chats and all. Is my voice audible? Yeah, you sure? Yeah, you're audible. First of all, thank you very much for taking out the time. Thank you very much for giving us your time. Although I came to know in the morning, that your health is not good. And thank you for proper like introducing the subject with words number 7.7 and then 7.8. This is actually the topic which is above than basics, and some of them have got or some of them has prepared their philosophical foundation. And this concept of impersonalism एंड पर्सनलिज्म जो आपने बताया कि भगवान का रूप होता है और भगवान का रूप नहीं भी होता है, ये दोनों आपने बहुत अच्छे से समझा है। और उसके बाद में आपने जो ये हेनरी फोर्ड का एग्जांपल दिया था कि वो अपने कैसे कार से भिन्न है, रतन टाटा का एग्जांपल दिया था, तो ये हमारे आज का प्रेजेंटेशन का आधार था कि हम किस प्रकार से जान सकते हैं कि भगवान हर एक जगह है अपने एनर्जीज़ के माध्यम से। तो धन्यवाद, आपने हमें इतना टाइम दिया। अब जो क्वेश्चंस हैं हम वो ले सकते हैं। एक क्वेश्चन अनुज अत्री जी की साइड से है, ही इज़ फ्रॉम दिल्ली से हैं। 4 मई like he is practicing God consciousness connected to ISKCON from last 4 months and daily chanting 1 round. He is one of the trainers there. तो उनका जो क्वेश्चन है वो चैट बॉक्स में मेंशन है। Just a minute. Okay, so Anuj Atri, this is how we can feel the presence of God everywhere, including non-material things. Okay. All right. So that's what we discussed, and actually we didn't discuss any non-material thing as such. We only discussed the material things. क्योंकि maximum time we are dealing with the material world, we are dealing with material facilities, we are dealing with material elements. जितना ज्यादा उनसे हम डील, क्योंकि ज्यादातर हम उन्हीं से डील करते हैं। See, the things which are not material or anti-material or are spiritual, basically to say, there are only two categories, either material or spiritual. So things which are spiritual, like when you go to a temple, automatically भगवान से relation हो जाता है कि हाँ यहाँ पे भगवान रहेंगे। आपको अगर माला दिखाई जाए, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा कि हाँ ये तो भगवान से रिलेटेड कुछ है। लेकिन क्या इतनी सिंपल चीज कि पानी पीते समय हम भगवान को देख सकते हैं? कुछ भी करते समय, एंड नॉट इवन दैट, इफ वील मूव फॉरवर्ड जस्ट अ सेकेंड, इफ माई स्क्रीन इज विजिबल, आगे अगर हम देखें तो टेक्स्ट नंबर 9 में भगवान बता रहे हैं पुण्यम गंध पृथिव्याम च तेजस चास्मि विभावसौ, आई एम द ओरिजिनल फ्रेग्रेंस ऑफ अर्थ, आई एम द हीट एंड फायर, आई एम द लाइफ ऑफ ऑल दैट लिव्स एंड आई एम द पेनेंसेस ऑफ ऑल एसेटिक्स। तो अगर हम कुछ भी धरती की कुछ भी सुगंधित चीज अगर हम सूंघेंगे, you will taste the fragrance of anything which has got sweet fragrance.
और हम ऐसा करते हैं ना, हम फूल को सूंघते हैं, वी अप्लाई deodorants. So specifically, if we apply deodorants, then we can understand that fragrance is coming from Krishna. क्योंकि वो कहीं ना कहीं it has been made from material elements and that flavor or fragrance is coming from the Lord. तो इसीलिए नॉन मटेरियल जो चीजें हैं वो हम भगवान से हम आसानी से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन मटेरियल चीजों से हम भगवान को रिलेट नहीं कर सकते. एंड देयरफॉर दिस एग्जांपल इज कमिंग. द मोर वी विल अंडरस्टैंड, अगर हम भगवत गीता अच्छे से पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कैसे भगवान हर जगह हैं. He is creating everything is coming from him, but he is not simultaneously present there, है ना. तो हम उनकी प्रेजेंस परसीव कर सकते हैं in each and everything. Many things, like if you will study 7th chapter and if you will study 10th chapter, in both of them there are some common conclusions which are there. How भगवान जो है हर चीज का बेस्ट भगवान है, like that. So in that sense, you can see the presence of the Lord more and more in spiritual things and material things as well. Any other question if it's there? क्या किसी और का कोई प्रश्न है? If no, then we can Okay. stop here. Yeah. So I would like to welcome Siddhant Tripathi from Kanpur. He is joining for the first time. And Ashlesha Rai, she is also joining for the first time. So आप दोनों का स्वागत है इस सैटरडे गूगल मीट में. And we hope to invite more guests and more devotees for our spiritual enlightenment. हम और डिवोटीज़ को रिक्वेस्ट करेंगे जैसे आज इन्होंने टाइम दिया. और कृष्ण मुकुंद प्रभु, क्या आप अपना जो नंबर है, like you can just comment in the chat box. If anyone may be having any question on this topic, they can contact you. You can just type your number in the chat box, so it will be helpful. Yes, sir. So thank you very much for giving your time, and thank you to everyone for your patient hearing. And we'll again meet next Saturday. And when we'll meeting on next Saturday, so it will be the starting of Kartik month. 16th October पुरुषोत्तम month is ending, 17th कार्तिक month is starting. तो आप सब लोगों से हम कार्तिक मंथ के पहले दिवस पर मिलेंगे और उस समय भी हम कुछ इंटरेस्टिंग जो सब्जेक्ट मैटर है उस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे. थैंक यू वेरी मच. सो वी विल स्टॉप हेयर. हरे कृष्णा. Sarthak, you can stop the recording.